नहीं 10 दिन नहीं देखो तो अपने एसएससी के क्या हो गया है एक बार तो मेरा 7 days ना इसमें से मैं सिर्फ 10 दिन के लिए आऊंगा फिर मेरा 7 days में इसमें से 5 दिन क्लासेस है आपकी 6 दिन क्लासेस होंगी 6 दिन में से 3 दिन को निकाल दो क्योंकि तुम 3 दिन क्लास लग जाएगी तो बाकी के 3 दिन तुम सिखा देंगे भी खाली के लिए बैठती है जिसके लिए मैं उसका बैठती हूँ और लास्ट में इंग्लिश के बाद बताया हाँ फिर उससे पहले क्या कौन अंकल है फिर उसके बाद उसके लिए आगे अंकल अंकल मैं बहुत कहना हूँ कि लोग और कौन ठीक है मैं नहीं देने वाली ले लेना हाँ ठीक है कर देना मुझे 10 दिन बाकी मैं तो सोचती थी 5 में आ जैसे कि किसी लीग जा रही है छोड़ के 29 से निकलने आएंगी फिर ये बार
मैं चाहता हूँ इसको वापस दर्शन दूँ। इंसान ब्लॉक कर दिया क्योंकि मार्क्स काफी तो मजा होती है कुछ रह नहीं सकता तो इसे लोगों को देखना बोलते हैं तो वे दिल मेरी मान मेरी राजस्थान वाली दीदी उनका नाम पीनू उनको राजस्थान के लोगों मुझे साइंटिफिक दिखा दिया पता नहीं ठीक है हमारे बिल्कुल नहीं मेरे बड़ा पापा की लड़की बेटी थी बेटी राजस्थान में इतनी डेवलप चीजें करी होती है मेरे घर आओ करो मेरा मन तो मेरे कितनी जरूरत मैं लास्ट से लास्ट में गई थी राजस्थान मेरे इसलिए भी काम है ऐसा मुझे राजस्थान पसंद नहीं है कि मेरे घर में थोड़ा देर रहती है ऐसा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि फिर मुझे टेरेस वाले रूम में जाके पूरा दिन फोन देखने मिलता है तो पहले भी नहीं बैठती मैं नीचे बैठती थी पकड़ खाना ऊपर जाना पड़ता है नीचे वाईफाई है ऊपर नहीं चलेगा दो वाईफाई भारी से मेरे पास एक डब्बा है दाल क्या है तो अच्छा है और देन कल लोग करेंगे ये किसको दाल है मुझे सच में ये मेरा डॉटर ये कर सकते हैं कि हम मेरे को मिल गया मैं यूट्यूब का बात करके बताया सो जाऊं तो मुझे मैं किसमें देखती हूँ गाना किसमें सुनूं कैसे मैं तेरा मोबाइल लिया था ना गाना सुनने के लिए हाँ गाना बोलने लगा ना ये बात मेरे पास है मैं कोने में बैठती हूँ मैं पढ़ती हूँ एक बार फ्री ना बैठ कल तो बैठती थी अरे इतना बड़ा परफॉर्मेंस कभी पता है क्या साइड से बीच में आई हूँ क्वालिटी और कुछ साइंस का और अंकल नाम को तीनों बैठ के इतना अच्छा गा रहे थे गाना वो पीछे देखने आ रहा क्या बोल दिया अंकल नाम से थी लड़की है वही बोल रही था मैं तो वही सोच रही What is पता नहीं
5 है वो 9 का क्लास 1 का तो ब्रेक होता है पर जब वही तो अंदर से सबको एक करना है वेरी बैड दोनों ही पढ़ते हैं क्यों बन गया सुनिए नहीं रहा है कुछ बोला क्या होता है मेरी सुनो हाँ मेरी सुनो मेरे को इसकी बतानी पड़ेगी चलो बाय बहुत बच्चों पे खिलाड़ी देखी हूँ बचपन में पता चला ये बात से को ये सब को नहीं ढूंढा मैंने बनाए हैं in the last one. Yes. Yeah, I'm replacing Amit Sharma sir, I think, today, Yes. for today. So how many of you are aware that today is physics class? You are aware about physics lecture today? Yes, sir. Okay.
So we were, I think, doing electricity. Do me about. Huh? You just started. Huh? No worries, you manage. Timetable. I think we just started. We quickly. Before going further, right? Let us discuss Before starting electricity, I would like to discuss the plan of study. Okay, how you are studying. We have already completed 2 chapters now. Right? We have completed chapter 9 and 10. Completed. Okay, so far. So, what is your study plan? मतलब, how are you studying, preparing for physics? कैसे कर रहे हैं? You completed physics in school. You completed this. How? What is making you say that? Can you now do all the questions on that chapter? You completed from where? Volume or textbook? Both completed? Very good. So this is what is needed. So every chapter in your volume, have you opened, how many of you opened the volume to see what kind of questions are there? Are you seeing the different types of questions? Right. So what kind of questions are there? You have previous year questions, right? You have previous year questions from board. Then you have what? You have review questions. Right? In review questions, you have classwork and homework. Most of the classwork questions I do. Right? Then you have application type questions. The application type. What else you have? You have MCQs. You have a lot of MCQs. Right? You have worksheet, miscellaneous questions. Miscellaneous. You have worksheets. Yes. On an average, every chapter has roughly 150 to 200 questions. Have you totaled the number of questions? Huh? It is roughly about 150 to 200 questions. Could be more, depending upon the topic. Right? So, how many of you have attempted for the completed chapter? One, he says, have you completed all? Then what have you completed? Then, and rest you have done. Okay. So basically, you must have seen by now that we take about 3 to 4 weeks. Like if the lecture is once a week, 1 hour. Okay. So we take about 3, 4, 5, or depending upon the size of the chapter. Light was a very big chapter. In ICSE, that is in 2 separate chapters. Right. So this requires around 10 hours. So which means roughly 2.5 months. Okay. Now 2.5 months. How is your study plan? Are you solving questions every day? Huh? So some students say, sir, this is lot of questions. Yes, it is a lot when you look everything together. Now, if you solve 10 questions per day, so how many days you have in 2 months? Let us say we took 2 months to complete the first chapter, which is light.
So 2 months is how many days? 60 roughly? Huh? Let's take 60 for simplicity. So 10 into 60 means you have room to do 600 questions. Every day, if you are doing only 10 questions, how many questions you can complete? 600. And 10 questions करने के लिए you won't take more than half an hour. Initially, you may take more, right? Because category of questions is more questions are here. MCQ, this, that. In MCQ के लिए 10 नहीं तुम 20-25 भी कर सकते हो. ठीक है? So the number of questions might be looking very big, but actually it is not big because your capacity to do questions is around 600. Where some questions are like, long answer questions that you can skip because that is theory part. Mostly you should focus on application type, numericals, MCQ. वो ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो. और जो long answer type है, how to frame the answers, etc. You should see on the book में देखो answer बनाओ. So you have to practice it. You should be able to articulate your answers. ठीक है? तो अभी क्या करना है तुम्हें? तुम्हें बनाना है homework notebook, self study notebook or whatever you may want to call it. ठीक है? Every class henceforth when you come, right? So we will be meeting, like today is an exception. Rarely I will show up twice a week. Okay? So generally we will meet once a week. So after we meet, you have 6 days or 7 days. Let's take 6 days. So 6 into 10, 60 questions should be attempted in your notebook every week. And this has to be regular process. You get it? Every week you have to complete at least 60 questions at the rate of 10 questions per day. So I will check your notebooks when you come next. How many questions you have attempted? When you do 60 questions in a day, it looks very big. But very easily 10 questions, just divide your workload. Same thing you can practice for mathematics also. So all the like physics, mathematics, this kind where numericals are more or more effort is needed. Devote time on a regular basis every day. Okay, that's when you suddenly don't feel very hard to the board. ऐसा नहीं. So you will total the questions. It will not be more than 150 to 200 per chapter. Make sense? So once you have a plan, what is the plan? 10 questions. 10 to 15, whatever, or you can increase it to 20, whatever is your comfortability, but minimum 10. Okay? Questions per day. Per day means you have to find time to do this if you want good results. Okay? Where do you look for question? In your volume and textbook. You are done with it, more the better. I have told you what is the capacity. You can easily go 600. This is with 10 questions. If you increase this, it will be much more. So if you run this, then you don't have to worry कि exam से पहले मुझे कुछ आ ही नहीं रहा है, सब कुछ नहीं होगा. Once you spend enough time with the questions, तुम्हें पता है किस टाइप के questions आते हैं, how to answer. And it's not like it is completely on your head. I'm asking you to attempt. When you are stuck, mark it. Discuss that in the class. The idea is that you're going through the question. That is the idea. Okay? While attempting, when you're stuck, you can come and always discuss with me. Is that clear? Okay? Everybody will give it a try? So, You have to. You don't have a choice. Next class, you have to come with the notebook. With minimum 60 questions attempted. Clear? including MCQs. And right now, I leave at you the selection of questions. Means every day it is 10, right? So 60 में अभी तुम पहले दिन को छोड़ दिया, तो next day तो वो लेना पड़ेगा ना. The choice of 10 questions, I leave it on to you. Each day 10 questions you have. And try to select it. Like एक ही type के question नहीं होने चाहिए कि खाली MCQ ही कर दिया होते, वैसा नहीं. It should be combination. Is that clear? But selection of 10 questions is up to you. Yes. Any question, anyone? The completed. You can start with the completed chapter.
तो लाइट से शुरू कर सकते हो, पहला लाइट ही है, बाद वाला ह्यूमन आई। और इधर कंफर्टेबल, तुम्हारा मेमोरी रिकॉल अगर ह्यूमन आई के लिए अच्छा है तो पहले वहां से शुरू करो, लेकिन ह्यूमन आई में भी फर्स्ट चैप्टर का नॉलेज लगेगा, तो इट इज लॉजिकल दैट यू स्टार्ट विद द फर्स्ट, मोर फ्रूटफुल। ठीक है, और तुमने भी वो कंप्लीट किया फर्स्ट चैप्टर। Yes, of course, as many questions from wherever. Like you also have solved exercises. So in your volume, you also have solved exercises as well as in textbook. Go through the solved exercises. Solved exercises questions sometimes are difficult. Okay, solved questions sometimes are difficult because they are designed to enhance your learning. So solved exercises, in text questions, do as many questions as you can. I've shown you how many questions you can do. In one day you can't do 600, but gradually you can. 10 करते जाओ, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी बढ़ जाएगी, तो तुम 10 नहीं, फिर तुम 30 40 क्वेश्चन एक दिन में करने लगे। समझ आ गई बात? ओके, लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रिसिटी. This is the start of the video. Today's video, you can look how to look for online video lectures. Huh? What is this? This is KKR, right? Branch name is KKR. KKR 26 means you'll be writing exam in 26. 10 CBSE Science. Search with this on YouTube. You will actually land up in the Science channel. There you'll have playlist of every professor. All the lectures are uploaded there. Automatically, once the lecture is completed, video is uploaded. Okay? So you should make use of these resources. मतलब तुम question solve कर रहे हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो वो डेट का लेक्चर निकाल के देख लो. एंड 1-1.5 घंटे का लेक्चर है तो तुम्हें 1-1.5 घंटे में नहीं खत्म करना. यू कैन फास्ट फॉरवर्ड, राइट? क्लिक कर करके आगे जाके पूरा बोर्ड फिनिश होता है वहां तक चले जाओ. फुल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी तुम्हें. सो यूज इट स्मार्टली. ठीक है, तो कम टाइम में यू कैन डिलीवर मैक्सिमम आउटपुट. इज दैट क्लियर? तो ये लिंक लिख लो. दिस इज हाउ यू टू सर्च. लाइकवाइज अगर मैथ्स चाहिए तो वहां पे मैथ्स लिख देना. साइंस में तुमको सब मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री वालों सारे प्रोफेसर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. ठीक है, बट राइट 26 क्योंकि ओल्ड भी है और 24-25 और. So this is how you can benefit from our online resource. This is online library. So every year it gets added. Okay, let's go. Okay, so we started with electricity and we discussed electric current. Yes. How did we define electric current? Okay, we defined electric current as I is equal to Q upon T. And where what is Q? Electric charge. Electric charge. So where Q is equal to NE. Then Q is equal to NE. What is E? E is charge on one electron. N is the number of electrons. So the total charge is made by not one electron, so many electrons which is passing across the cross section of the conductor. So this is what it is. So depending upon how the question is asked, you will use one of these formulas. Then we discussed about potential difference, electric potential difference. So this is represented as V.
So who provides potential difference? Cell. ठीक है, बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के चार्ज मूव नहीं करेगा कंडक्टर में, ठीक है. So potential difference is nothing but work done per unit charge. Electron on its own will not move. उसको मूव करने के लिए we require potential difference. Just like water को मूव करना है तो क्या चाहिए? Pressure difference. एक साइड में ज्यादा प्रेशर है तो ही वो लो साइड में फ्लो करेगा. हाई टू लो, हाई साइड में क्या होता है? मोर प्रेशर, तो हाई टू लो फ्लो होगा. वैसे ही सेल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. सेल का सिंबल क्या था? तो ये हाई हाई पोटेंशियल है, ठीक है, लो पोटेंशियल. तो अब इसमें अगर हम कोई कंडक्टर लगा देंगे तो करंट किधर से फ्लो होगा? हाई टू लो, ऐसे फ्लो. सेल की वजह से फ्लो होगा. करंट क्या है? नथिंग बट चार्ज. चार्ज को कौन पुश कर रहा है? सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज सेल. तो सेल प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस. ये किसके पास होता है? पोटेंशियल डिफरेंस. It is because of this potential difference current is possible. And how do we measure potential difference? It is given as work done in moving unit positive charge between 2 points. Work done per charge, that is potential difference. See? And then we also discuss unit. What is unit of current? 1 ampere. What is unit of current? 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. And what is the unit of this? So this is volt. 1 joule upon 1 joule. इसको भी सिंबल में हम लिखेंगे फर्स्ट B is equal to 1 joule per coulomb. So whenever the potential difference is 1 volt, it means to move 1 coulomb of charge between any 2 points, the energy spent will be 1 joule. Then the potential difference between those 2 points is 1 volt. This is how we define. Okay, so we had done till here. Did we define what is electric circuit? Did we do any numerical? No. So let us first draw the. Let's do the numerical first. A current of 5.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb. This is the first question in your NCERT. It may be in your volume also. Yes. It is there. Which page is that? 112. Okay, come to verb 1 2. Let's do example 11.1. What is given? You are provided with a current of given I is equal to 0.5 ampere. ये दिया है तुम्हारे पास, ठीक है. Time given is 10 minutes. So for how much time the current is flowing in the circuit? For 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. So you have to find Q equal to what? Simple. What is the relation between I, T and Q? I is equal to Q by T. Solution. So first we convert that the Q by T. This means Q is equal to IT. So how much is I? So this you can convert in seconds. So this is 600 seconds. So 0.5 into 600. So 300 coulombs is the answer. Okay, straightforward. So from the given data and what you have to find out, just relate the three things.
So we are done till here. Then there are some in-text questions. The first in-text question is, what does an electric circuit mean? Electric circuit. What is an electric circuit? What you see here is the example of electric circuit. Right? So what is it? It is a closed and continuous current conducting path. Okay, write down. It is a closed and continuous current conducting path consisting of source of cell battery appliance. Okay, this is what is a circuit. It is a closed and continuous current conducting path consisting of source of current. What is source of current? Cell or battery. Load. Load is like electric bulb is the load. You know, the appliance, the device that you want to power using the cell. Then connecting wires. Connecting wires are, how will you connect cell to the bulb? You require connecting wire, which is conductor, which conducts electricity. And plug key. You require plug key also. So you require plug key to switch on and switch off the current. So plug key is represented with this K. Okay, so this is the first question of the in-text. This is plug key. Can you see this? Yes. So when you have the dot between the bracket, that is when the switch is on. When there is no dot, that means switch is off. And second question is unit of current. So below this, you can draw the circuit diagram. This is a simple circuit diagram. I have added few more things. So you have plug key,
This is cell. This is rheostat. A is applied. No, it is ammeter to measure current. B is voltmeter. So we are going to discuss all this. Okay. So this is the simple circuit diagram. R, this is load. R is low. Yes. This is load. तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, हर एक अप्लायंस को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वही तो हमको सेल चाहिए, उसको पावर करनी है, ठीक है, दैट इज लोड. So where R is resistance of the load. ठीक है, K is plug key. This is voltmeter. To measure potential difference. It is ammeter. What is ammeter? Measure current in the circuit. So this is a close conducting path. Then you also have rheostat. What is this? ये भी फिर से करने वाले हैं. This is rheostat. What is it? It's a variable resistance. ठीक है, रियोस्टेट क्या होता है? देखो, आ जाओ. So एक तो क्या है कि you want to switch on switch off करंट, ठीक है, जैसे फैन हमने switch on switch off किया तो आए चालू हो, बाद में फैन का स्पीड भी तो कम ज्यादा कर सकना चाहिए, उसके लिए रियोस्टेट चाहिए, रेगुलेट करना, रेजिस्टेंस को वेरी करके करंट को कम ज्यादा करना. रेगुलेटर इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. हाँ, रियोस्टेट. लैब में हम उसको कैसे करेंगे? रियोस्टेट यूज करेंगे, ठीक है. तो रेगुलेटर में क्या होता है, करंट ज्यादा हो गया तो स्पीड बढ़ गई, करंट कम हो गया तो स्पीड कम होगी. करंट कम कैसे होगा? जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा. उल्टा रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन. व्हेन यू इंक्रीज द रेजिस्टेंस लेस करंट विल फ्लो. ठीक है, वो सब हम करेंगे. पहले ये देख लो, ये पूरा ही पढ़ना है, ये पूरा सब कुछ इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है, हर एक काम. ठीक है, खाली मीटर छोड़िए, मीटर का खाली फंक्शन है ना. तो ये हो गया तुम्हारा व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन यूनिट ऑफ करंट. क्वेश्चन 2. ये सब इंटेक्स क्वेश्चन है. इंटेक्स क्वेश्चन 1, यूनिट ऑफ करंट. पहले सर्किट लिख लो, फिर बाद में आते हैं. ओके, राइट टुडेज डेट आल्सो. लास्ट कभी स्टार्ट किया था, डेट लिखा था इलेक्ट्रिक. हाँ, वो डेट लिखो, आज का डेट लिखो फिर से. एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर टुडे ओनली. 20th May. Rheostat.
ammeter, ammeter, A-double-M-E-T-R. Ammeter मतलब it is an instrument to measure current flowing in the circuit. मालूम पड़ना चाहिए ना कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है. अपने घर में जो वायर है कितना एम्पियर फ्लो होता है? अगर एसी यूज कर रहे हैं तो नियरली 1 एम्पियर के आसपास आ जाएगा. 220 वोल्ट है. 220 वोल्ट है. करंट कितना होता है? 1 एम्पियर इज अ लीथल करंट. 1 एम्पियर एक टी. ठीक है, तो जो बल्ब वगैरह में जा रहा है एम्पियर में नहीं होता, वो बहुत कम होता है. बहुत कम होता है, मिली एम्पियर्स. अपने बॉडी में भी करंट है, वो किसमें? माइक्रो एम्पियर. इलेक्ट्रिक प्रेस, हाई पावर, गीजर, एयर कंडीशनर, जिसका भी वोल्टेज ज्यादा होता है ना, वॉट लिखा होता है ना. गीजर कितना होता है? 1000 वॉट. इलेक्ट्रिक प्रेस 1000 वॉट. ऑल दी appliances whose power consumption is more, they suck or they run on very high current. ठीक है, बल्ब उतना नहीं है, फैन में भी उतना नहीं है, लेकिन जो हाई वोल्टेज के डिवाइस है उसमें होगा. So if there is a insulation break, there is an insulation break in the wire which is connecting your air conditioner. वो गलती से तुम पे फ्लश कर दे, so you get a heavy shock. इतना कि मतलब घंटा भर तो अगर बच गए तो घंटे भर बाद ही सेंस आएगा, अगर बच गए तो. मतलब इट्स वेरी अनकंफर्टेबल. तो ऑलरेडी शॉक लगना शुरू हो गया. सोच. So इसलिए don't fiddle with electricity unnecessarily. You can do that with protective gears and with knowledge. Okay, can I describe what is unit of current? Are you done with the circuit? Yes. You have to define what is unit. The amount of charge to be installed across the conductors per coulomb per second. So since I is equal to charge flowing per unit time, so what is 1 ampere? Therefore 1 ampere is equal to 1 coulomb on 1 second. So how will you write it? Current flowing to a conductor is said current flowing through a conductor is said to be 1 ampere when 1 coulomb of charge flows across the cross section Per second. of a conductor per second. Okay, so mathematically you write like this, but description becomes little longer. It is just to check your understanding. Mathematical equations are basically make your lives simpler. What it takes about a paragraph in English can be written in one equation. Okay. Now the third question. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Third question is
number of electrons in 1 coulomb of, you have to find how many electrons make 1 coulomb. So since U is equal to NE, therefore N is equal to Q by E. So what is Q? 1 coulomb. What is E? 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So 1 coulomb divided by charge on 1 electron will give you number of electrons. So this comes around 6.25 into 10 to the power 8. 10 raised to power 18. So 6.25 billion. Very large number of electrons. So 1 coulomb is a very big charge. Right? 10 to the power 18 it is. 1 billion is 10 to the power 9. So 6.25 billion electrons constitute 1 coulomb of charge. Now you imagine how big current 1 ampere is. 1 ampere is when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second. That will set you right once and for all. So listen to your mom and dad, and people who know. Right? Otherwise, coulomb won't tell you. It will only shock you. Chill you. Right? So they discover You disturb him back. I'll watch. Disturb him back. जैसे डिस्टर्ब किया तो वैसे ही कर उसको तो मुझे मालूम पड़ेगा कैसे करना है और कीप सफरिंग क्या प्रॉब्लम है देखो इधर आ जाता कब अरे वो टॉल है वो तो देख नहीं पा रहा है तो बार बार उसको उंगली कर रहा होगा तो वही कर रहा है उंगली कर रहा है टी-शर्ट पे ड्राइंग कर रहे हैं उसको नहीं लिखना है क्या उसके आगे कोई और बैठा है तुम आगे आ जाओ ना क्या दिक्कत है या फिर तुम पीछे चले जाओ आ जाओ अंदर बैठेगा इधर ही बैठेगा साइड अंदर बैठेगा ठीक है दिख रहा है यहाँ से दिख रहा है So, is it clear what is the number of cross section? ये जो circle दिख रहा है what is the cross section? When you cut anything, what do you get? Cross section. Cross section. Section means cutting. Perpendicular cut. इसी को cross बोलते हैं ना slant नहीं है cross section. ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ कोई भी कंडक्टर जैसे ये कंडक्टर है ठीक है 1 एम्पियर करंट हर जगह है ना कंडक्टर में कहीं पे भी तुम एमीटर लगाओ यहाँ पे लगाओ कहीं पे भी एमीटर लगाओ हर जगह से 1 एम्पियर जा रहा है ना तो चाहे मैं ये वाला क्रॉस सेक्शन लूं या ये वाला लूं या ये वाला लूं कोई भी लूं हर क्रॉस सेक्शन से कितना जा रहा है 6.2 to 10 raised to 18 क्रॉस हो रहा है एवरी सेकंड समझ आया एवरी सेकंड इट इज फ्लोइंग अक्रॉस कोई भी सेक्शन ले लो infinite sections are possible right so throughout the conductor it is this is maintained okay and it is in loop कैसे आ रहा है सेल सप्लाई कर रहा है वापस यहाँ पे आ रहा है न्यूट्रलाइज हो गया फिर रिएक्ट हुआ और चार्ज बना ऐसे तो सेल का चार्ज खत्म कैसे होता है मोबाइल में
चार्ज यहाँ से आया, यहाँ न्यूट्रलाइज हो गया, फिर आया, फिर न्यूट्रलाइज हो, तो ये यहाँ से रिएक्ट कर करके चार्ज देते रहते हैं टर्मिनल। 24 घंटे में चार्ज खत्म हो गया इलेक्ट्रोलाइट, तो फिर से क्या करो, रिचार्ज करो। समझ आया? वैसा है। When cell is in use, chemical energy is converted into electrical energy. ठीक है? फिर जब when we are charging the cell, then the electrical energy is converted back to chemical energy. चार्जिंग का मतलब इलेक्ट्रोलाइट में से जो चार्ज खत्म हो गया था सप्लाई कर करके, वी आर रीफीडिंग द चार्जेस इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? जाते हैं उसके अंदर। यस, देखो पहले क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट के चार्ज से बाहर आके खत्म हो गए। ठीक है? तो जब रिचार्ज करेंगे तो हम उसमें चार्ज फिर से फीड कर रहे हैं, इसीलिए तो चार्जिंग हो। नहीं, वो इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है, वन दैट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें एक बार खत्म हो गया तो यू टू रिप्लेस द सेल। दूसरा कौन सा होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? जो रिवर्सिबल प्रोसेस फॉलो करता है वही रिचार्ज हो, सब नहीं। That's why you have two types of cell, chargeable and chargeable and unchargeable. One thing is, ठीक है? अगर बैटरी मतलब और बैटरी नहीं होती ना, जो तुम्हारे क्लॉक में जो रिमोट में जो सेल होता है वो रिचार्जेबल नहीं होता, तो वो सस्ता हो। हाँ, ऑब्वियसली रिचार्जेबल वाला महंगा होता है, सस्ता वाला का यूज एंड थ्रो। Everything use and throw is cheap, but everything which has a durability, it is costly. Okay? Is it understood? Okay, let's go further. We have already discussed electric potential and difference. Okay, let's do the next example. ये मेरा है क्या? ठीक है। All right. Question 11.2 now. Example 11.2. This is example 11.2. We have how much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having potential difference 12 volt. Since W is equal to W by Q, V is equal to, so work is equal to how much? Q times V. Q given is 2 coulomb and V given is 12. 24 joule. Work done unit is joule. Okay, guys, behave now. Be nice to me, I'll be nice to you. You get it? That'll be nice. Okay. Next is some symbol of some components, right? Do we have in-text question? Okay, let's take in-text question. So I'll read the in-text question. You may not have in-text questions with you, some of you. The first is, name a device that helps to maintain a potential difference across the conductor, cell or a battery. So in-text question 1. What is the page number? In-text question 174. 174. Page 174. ITQs, okay? In-text questions. So first answer is cell or battery. What is question 2? What is meant by saying that the potential difference between 2 points is 1 volt?
One column is done to move one column from one point. Correct. This. Hence V is equal to W by Q. Therefore, what is 1 volt? 1 joule divided by 1 coulomb. So how will you put it in English? The potential difference between the 2 points is 1 volt. When 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge between those 2 points. Okay? So PD, potential difference between 2 points, is 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge between the points. Okay, so you just have to put So what is P? potential difference. See the question, the clue is in the question. Right? So are you writing? We've done question 2. Question 3. How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6-volt battery? Do you have the question? No? You have the question. Question 3. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6-volt battery? What is energy? Work done. So since W is equal to QV, so each coulomb, 1 coulomb into 6 volt. What is it? 6 joules. Okay. So the amount of energy transferred to each charge is 6 joule. By 1 volt कितना करता है? 1 joule. तो 6 volt कितना करते हैं? 6 joule. As simple as that. All right. Okay, shall we proceed? Yes. Okay. So now let us discuss now we'll discuss some symbols. So symbols of yes, yeah. Symbols of commonly used components. Electric circuit. So first has to be cell. इसके बगैर कुछ नहीं चल रहा.
What is it? It is a electric cell. Then what is a battery? Two or more cells. Combination of two or more cells make battery. This is battery. It is combination of two or more cells. Combination of cells actually. That is a battery. What is it? Open plug key. What is it? Open plug key. Open plug key is like switch off. That is switch off. आपने पूछा देखो अभी कोई नहीं आएगा ठीक है you're not kids actually you are supposedly grown up kids some look grown up but actually that's none of my business देखो तुम क्या कर four what is it closed plug key when you have a dot in between it is closed plug key closed plug key is like switch on plug key is like switch on so your current conducting path will not be conducting unless there is a dot shown between the dots between the brackets 5 you have whenever you have two wires join this means it is joined wire joint it's 6 wrong with it. Keep it down no it will fall and make noise then नीचे से दूर रखो ना पैर से अपने wire joint okay next is now suppose you have two wires this is wire crossing there is no contact between the wire one wire is going from above Sir, wire joint. वो वायर लेके आपस में टाइट करने वो वायर जॉइंट इंसुलेशन निकाल के वायर को निकालोगे तो अंदर से कॉपर निकलेगा कॉपर कंडक्टर है ना दोनों का इंसुलेशन निकाल के टाइट करोगे तो ज्वाइन हो गया लेकिन इंसुलेशन के ऊपर से जाते हैं ये सब पैरेलल वायर साथ साथ जाते हैं तो उसमें कनेक्शन थोड़ी एक वायर इसके ऊपर से जाता है इंसुलेशन इंटैक्ट इस वायर क्रॉस ठीक है जैसे ये देखो ये एक वायर है इसको मैंने ऐसे कर दिया तो क्या इस पे से जा रहा है क्या ये इज देयर एनी कनेक्शन नो कनेक्शन अभी इसको मैंने कट करके इसको ज्वाइन किया तो क्या होगा वायर ज्वाइंट होगा
क्या हुआ? So wire joint and wire crossing. Is it clear? In wire crossing, there is no electrical contact. Wire crossing. Then we have, how do we show electric bulb? Electric bulb. We show it like this. Any device that you take, it has two contacts. ना दो वायर रहते हैं। एक हाई दूसरा लो, एक तरफ से करंट घुसेगा दूसरे साइड से बाहर आएगा, ठीक है? इसके लिए एनी अप्लायंस हैज टू कॉन्टैक्ट्स। तो एक ये बल्ब को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, और इसके अंदर से एक फिलामेंट जाता है, ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है? सर ऐसा बहुत तरह के होते हैं जो तुमको बता यूज करना चाहिए। बल्ब बहुत तरह के हो सकते हैं, अलग अलग डिजाइन, लेकिन फंडा ये मतलब क्या है, कंटिन्यूअस पाथ है, करंट रोड फ्लो होना चाहिए, बीच में फिलामेंट टूट गया तो बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। सुना है कि नहीं? Have you heard about fuse bulb? आजकल तो वैसे भी हम फिलामेंट वाले बल्ब यूज नहीं करते हैं। Do we use filament bulb? What do we use? LEDs. So LED is a different technology. ठीक है? These are very low power consuming but high output. Like अगर मैं पुराना वाला बल्ब यूज करूं, it will consume 10 times the electricity and it will not give me luminance like this. So this is very cheap and much energy efficient. ठीक है? क्योंकि टेक्नोलॉजी अलग है, उसमें हीटिंग, उसको हम जो फिलामेंट यूज करते हैं, वी हीट द फिलामेंट सो मच सो दैट इट बिकम्स रेडिएटिंग, इट स्टार्ट्स ग्लोइंग, इतना हीट हो जाता है कि वो रेड हॉट हो जाता है, फिर और हीट होके फिर व्हाइट हो जाता है, तो उसमें एनर्जी बहुत जाती है। लेकिन एलईडी इज डिफरेंट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज रेजिस्टर। Okay, so the symbol is this. Now this Hey, what happened?